के दो। निया, किससे बात कर रही हो? निया, मामा को बताओ। सीक्रेट है। मामा से सीक्रेट? मुझे नहीं बताओगी? आप जानती हो मैं किससे बात कर रही हूँ? नहीं बेटा, मैं नहीं जानती। मम्मा, मैं पापा से बात कर रही हूँ। निया, तुम्हारे पापा मर चुके हैं। मैं आ गया हूँ बेटा, मैं आ गया हूँ तुम्हें लेने। My director, we are making a horror film, but he's a very funny guy, and I'm pretty much a little scared of the pranks that he plays. You know, I am very religious, and I believe in God, and that there is a God, and I'm one of the blessed ones to reach here and be a Bipasha Basu for so many years from nowhere. Right. I think there has to be a God above. So that belief and faith I always have. I'm not overly ritualistic. I've said this again and again, but with time I really have to say that I am getting more and more spiritual. Like my calling for God has become a little more. And it's not because of, you know, presence of parents or anything. It's just a natural calling. You know, there are many, when we read on an internet or we read through a lot of religious texts or anything, there are, you know, a lot of religions believe that there is an afterlife. And there are lots, you know, there are lots of people who are non-believers. But I believe that there is a soul. So I'm sure the soul must be going somewhere. So I believe in an afterlife. You know, I really don't have a perfect answer for this. But I would only say that the script, the screenplay, the way Suparn gave me the first narration, I could just see that, you know, this is a fabulous film. It's going to be very entertaining. And at the same time, I as an actor, you know, have to step ahead somewhere. Definitely horror is a genre where people think, oh, it's very new, you know, dar lagta hai bahut janon ko. But it is one of those very nascent stages where India actually can, you know, do so many different kinds of stories by using horror as a genre. I think it's time that many interesting stories can be made along this supernatural horror genre. Fine. So all in all, I can just say, for the sake of entertainment and the fact that I'm a greedy actor, I have done Atma. मेरा वही रिएक्शन था जो इसीलिए सवाल शायद आप कर रही हैं, जो वो फैक्ट है कि मेरा रिएक्शन ये तो बिपाशा बसु, oh my god. Well, I don't know. I'm actually becoming the face of fear, I guess. Yeah, I mean, we are always excited about all the film we're doing. In fact, ये film मैं थोड़ा ज़्यादा excited हूँ because I remember when the narration was happening, Bipasha was आंखें बंद करके narration सुन रही थी. तो मुझे लगा कि ये film करेंगे कि नहीं करेगी पहले तो, because she was so scared while the narration was happening, and I really thought कि I didn't think she heard the narration because her even ears were like shut. आत्मा का सबसे बड़ा रीजन है ऑफ कोर्स, एक तो बिपाशा थी, एक तो और दूसरा ये थे कि एक सब दूसरा रीज़न ये था कि इट्स नॉट ओनली हॉरर फिल्म, इट्स लाइक बहुत ही इमोशनल ट्रायंगल है इसमें हम लोगों का, जो मेरे ख्याल से जब मैंने पहली बार सुपर ने जब मुझे स्टोरी सुनाई थी तो मेरी भी एक बच्ची है 2 साल की, तो मैं वो चीज़ फील कर सकता था, जिसकी वजह से कि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की वो चीज़। तो मेरा एक रीज़न, ये बहुत बड़ा रीज़न था कि एक जो इमोशनल ट्रायंगल होता है, एक पेरेंट्स और एक बच्ची या जो भी उनके बीच में जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है वटवर जो, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया था मुझे। ये फिल्म सिर्फ हॉरर ही नहीं, उसके अलावा जो इमोशंस हैं उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस फिल्म में। नहीं, बिल्कुल परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। सबसे ज्यादा सेट पे मैं ही डरती हूँ। जैसे अभिषेक ने बताया, नरेशन में सबसे ज्यादा मुझे तो लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, बिकॉज we did in Land's End. First and only choice. I'll tell you, my first meeting with Nawaz took place at Chai Coffee. I'm promoting it, and we met. Kahani had just released, and I met him, and the only thing I told him is मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप सुनिए और बताइए अगर आप ये फिल्म नहीं करेंगे तो आपके अलावा ये कौन एक्टर कर सकता है। He heard the narration, he didn't have an answer, so he said yes. So that's my answer to you. Well, Kumarji already asked me to work on the script of Atma 2, so I think Atma 2 is definitely happening. In terms of leaving a door at the end, see, my thing is this. Watch Atma first. Okay, watch Atma first.
आत्मा के दौरान भी नींद नहीं आ रही है. Well, आपने मुझसे नाइट को भी शूट किया. Like recently I said that I think I'm Batwoman because I never sleep. Because आजकल जब से dubbing promotion शुरू हुआ है, we are only talking about supernatural stuff and we are talking about promotion and we are talking about we're seeing the film again and again. So मेरी नींद फिर से it's gone. So मैं जैसा मैंने कहा मैं बहुत डरती हूँ. हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, सीन कर रहे थे, अचानक एक फ्रेम था और सीन चलते हुआ अपने आप ही वो फ्रेम ऐसे हुआ, राइट में रोटेट हुआ और फिर अपने आप ही सीधा हो गया. और वो मैं सीन कर रहा था, मैं देख रहा था उसको और डायलॉग भी बोला ऐसे देखा है. तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही bizarre चीज है. Actually we have the actual footage. We have the footage that because Nawaz was only performing and we were all looking at the judge and Nawaz was performing. So we could see two frames of Mahatma Gandhi and Ambedkar Sahab. And suddenly the Ambedkar thing just tilted and fell. And in the Chalu take, the Ambedkar frame jumped back up. It went right up, shook for a bit and settled down. And it's on camera. So, and we have it on camera. And I was the first person. I'm always so scared. I ran to check the footage and I saw this and I told Suparn, and because we were shooting night and we had to get out of the place fast, Suparn just said, okay, don't discuss this. Let's get out of here quickly, and we all ran away. मुझे तो बहुत सारी चीज़ों से डर लगता है. मैं तो बहुत ही डरपोक आदमी हूँ और लेकिन आत्मा से मुझे डर नहीं लगता. लेकिन लाइक जैसे इसमें जो आत्मा दिखाई गई है वो इस तरह नहीं कि लाइक जैसे कोई एक आदमी आ गया अचानक से. तो एक एहसास होता है कि आपने कोई गलत काम किया है, उसका जो आपको एहसास होता है, किसी के साथ आपने गलत काम किया उसके प्रति जो आपको एक एहसास होता है वो मुझे भी रियल लाइफ में होता है और बहुत सारे लोगों को होता है. और ज्यादा मिठाई खा लूं तो बहुत डरती हूँ. वेट मोटापे से डरती हूँ. Like I said, I can't, I'm not this perfect human being who can give you the perfect answers for this because there's no answer. I like these stories. They are entertaining films and they're interesting characters. ये फिल्म में थोड़ा ज़्यादा excited हूँ because I remember when the narration was happening, Bipasha was आंखें बंद करके narration सुन रही थी. तो मुझे लगा कि ये फिल्म करेंगे कि नहीं करेगी पहले तो, because she was so scared while the narration was happening and I really thought कि I didn't think she heard the narration because her even ears were like shut. डर लगा किसी से? नहीं. उससे डरती नहीं है, वो डराती है. I have to tell you, this kid is one of the bravest kids that I've seen.